शाहीना सरोज खान इस महफिल में आप सब का खैर मकदम करती हूँ. I welcome each and every one of you on behalf of Parvaz-e-Shaheen Rifat Sarosh Academy, of which I am the founder. You know, talking of Janab Rifat Sarosh, एक छप्पर का घर नीम के साए में ऊँघता है धुंधलके में लिपटा हुआ. शाम का वक्त है और चूल्हा है सर्द, और सहन में एक बच्चा बरहना बदन बासी रोटी का टुकड़ा लिए हाथ में सर खुजाता है. जाने है किस सोच में, तुम हिकारत से क्यों देखते हो इसे. दोस्त, ये मेरे बचपन की तस्वीर है. दोस्त, ये मेरे बचपन की तस्वीर है. ये है जनाब रिफत सरोश. आज उनकी 100 साला जश्न हम मना रहे हैं, और इस खुशी के मौके पर उनको सेलिब्रेट करते हुए आप सब की मौजूदगी हम सब के लिए भाई से फख्र है. एक बार फिर हम तालियां बजाना चाहते हैं सबके लिए. रविश रविश पे सबा का खराम देखेंगे, हर एक शाख पे माहे तमाम देखेंगे. रविश रविश पे सबा का खराम देखेंगे, हर एक शाख पे माहे तमाम देखेंगे. हर एक हाथ में फूलों के जाम देखेंगे. हर एक हाथ में, शुक्रिया बहुत राजू, आपके फूल मेरे लिए लेके आए. हर एक हाथ में फूलों के जाम देखेंगे. अभी तो कांटों को हंसना सिखा रहे हैं हम. नई हयात के नक्शे बना रहे हैं हम. नई बहार के परचम उड़ा रहे हैं हम. बहुत सही कहा नवेद ने. चंद लम्हे आप लोगों ने निकाले, और अगर मैं सबका नाम लेने लगूं तो वक्त हमारे पास कम है. लेकिन विक्रम और उषा सजवान और तापस सेन, मीडिया के बहुत दिग्गज, पूरा रेडियो मिर्ची इन्हीं के दम से चलता है. और मेरे खालाजाद भाई राजू आ गए हैं, और उनकी बेटी, और नरगिस उनकी वाइफ, और क्या क्या बताऊं, मेरे स्कूल के साथी. प्लीज़ आप तो खड़े हो जाइए. हम लोग पिछले 65 साल से साथ में हैं, और मेरे दफ्तर के साथी प्लीज़ इतने बड़े दिग्गज खड़े तो होइए. आप तो खुद ही अपना नाम लेंगे जी. बहुत बहुत बड़े हिंदी के राइटर हैं. आइए तशरीफ़ लाइए. और इस वक्त असल में हम सब, जैसे नवीन ने कहा कि हम तशद्दुद के दौर से गुज़र रहे हैं, और इतवार का दिन, और आप सब लोगों की ये मोहब्बतें हैं. माफ़ कीजिएगा, मैं हर एक का नाम ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि फिर उसमें वक्त चला जाएगा. कि इसी महीने देखिए मदीना में तशद्दुद, दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट, और 22 अप्रैल को पहलगाम. तो इट्स हैरेसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, एग्रेशन, फिजिकल फोर्स, क्रूअल बिहेवियर हैज़ ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. So let's pause for a moment and send out our prayers. Try to promote brotherhood. Let us pause and contemplate as to where we are going as a society, as humanity. We really need to save ourselves. Going back to Parvaz-e-Shaheen Rifat Sarosh Academy, as I said that we instituted this academy some 16 years ago. And I'm very thankful to everybody who has come forward, and I've already named the latest member we have. So let us watch this video put together by Mr. Ahmad Khan, one of the 7 grandsons of Janab Rifat Sarosh. 2 of them are here, I've already named them. And he's a very active member of Parvaz-e-Shaheen Rifat Sarosh Academy, also along with Shazia Khan, who is his granddaughter. She is actually the president of PSRSA. So let's watch this video.
I now request Ahmed Khan to tell us about Rifat Sarur Sahab. So I'm sure a lot of us are familiar with the work of Janab Rifat Saroosh, and there might be people in the gathering today who might be wondering who Janab Rifat Saroosh was. That's him in the picture on the banner with his work, his books, his awards. And I just want to share the life and times of Janab Rifat Saroosh, her father, my grandfather. He was a celebrated poet, an author, a dramatist, a broadcaster. Late Janab Rifat Saroosh is noted especially for his socio-historical sensibilities. The lyrical quality of his poetry, operas, verse plays, and his deep sonorous voice in the All India Radio made him popular with people for more than 6 decades of his career. His real name was Syed Shaukat Ali. He belonged to a learned family of Nagina, district Bijnor in Uttar Pradesh, India. He was born in 1926 and he received his early education from his eldest brother, Maulana Mumtaz Ali, a Fazil from Deoband. His poetic pursuit was inspired and encouraged by another elder brother of his, Syed Ishtiaq Ali Shauk. He started writing poetry and getting recognition at a very early age. Soon after his first degree, he moved to Mumbai, where he was literally handpicked by Syed Bukhari to work in All India Radio, primarily because of his golden voice and Urdu verses and lyrics that he used to fondly write. He joined AIR in 1945 and retired from active service in 1984. His first book was published in 1963 when he breathed his last. On November 30th in 2008, his 56th book was in press. These books contain short poems, lyrics, radio plays, features, dance dramas, and also his autobiography. It is still being read and appreciated by lovers of art and Urdu literature. He was well versed with communicative potential medium that drew heavily from the common heritage of Urdu and of Hindi. Arabic and Persian traces in his writings witnessed his habit of avid reading and the composite cultural attitude that he had. At the time of his sad demise, he gained some 40 to 50 awards for his work, scrolls of honors, shields of recognition, medals, sitting on his living room shelves alongside 55 books written by him. This spells out the 82 years of his long life and his contribution towards literature. His long life of social commitment, dedication, and sustained work in the field of Indian literature and encouragement of upcoming talents will keep his name alive in the annals of history. Thank you. And I bring you some verses, Naatya Rubaiyan, Rifat Sarur Sahab ki. Mulaiza farmaiye. It's devotional couplets for those. इजहार सदाकत का हुनर दे यारब, इजहार सदाकत का हुनर दे यारब, अल्फाज को एजाज़ो असर दे यारब, लिखने के लिए नात उठाता हूँ कलम, लिखने के लिए नात उठाता हूँ कलम, सीने को मेरे नूर से भर दे यारब, हैरान है दिल और नजर है शजर, ये मेरा कलम नूर का पैकर यकसर, आवाज ये आई कि मुबारक हो सरोश, ये पाक हुआ नाम मोहम्मद लिखकर, फारान की चोटी हो सफा या मरवा, वो बदर का मैदान हो या गारे हिरा, इस्लाम की अजमत की निशान है ये सब, या गूंजती है अब भी मोहम्मद की नवा, एक ऐसा बशर खत मोहब्बत जिस पर, एक ऐसा अमीन मोहब्बत जिस पर, एक ऐसा अमीन खत सदाकत जिस पर, चर्चा है फलक पर
کہ زمیں پر پہنچا ایک ایسا نبی ختم نبوت جس پر، ایک ایسا نبی ختم نبوت جس پر. رفت سروش کل کہیں خارج نہیں، اس رند باصفات سے کوئی بدگماں نہ ہو. ادب کا سفر ہو، زندگی کا سفر ہو، آواز کا سفر ہو، سب ایک دوسرے کے راز مرجوع ہیں. اور جو سفر آواز کا ہے، میں نے 1945 میں آل انڈیا ریڈیو بمبئی میں قدم رکھا تھا اور میری آواز کو تربیت دی تھی ذوالفقار بخاری نے، جو اپنے زمانے کے بلکہ دنیا کے مشہور براڈ کاسٹ میں سے ان کا شمار ہے. ذوالفقار بخاری نے مجھے لے جا کر کہا بول. میں بولا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں بولا ہے، دوبارہ بولو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ریڈیو پر بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، مخاطب آپ کا انسان ایک ہو، تاکہ سیٹ پر ہر آدمی سمجھے کہ ہم سے بات کر رہا ہے. جو گفتگو کا طریقہ مجموعے میں ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا سبق انہوں نے ہمیں یہ دیا. تو یہ تو بہت لمبا سفر ہے، اور اس سفر کی اگر آپ منزلیں سوچیں، منزل تو کبھی کسی چیز کی ہوتی نہیں. ظاہر ہے کہ میں آج بھی تعلیم ہوں، آج بھی میں اپنی آواز سے، اپنے قلم سے اور اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے جو خدمت کر سکتا ہوں، ادب کی، انسانیت کی اور عام آدمی کی، وہ پتہ نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن مطمئن نظر یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے کام آ جائے.